Hello everyone, welcome to your own channel Tisking. So as you know that only 25 days are left for your CUET PG examination. This is the time you should fuel up your preparation. You should gear up your preparation because the competition is going to be very tough, you know. ओके सो लेट्स डिस्कस आपका टॉपिक क्या है, क्या आने वाला है और कैसे आप 25 डेज़ में आप प्रिपेयर कर सकते हो जिससे आप अपना एग्ज़ाम क्रैक कर सको इन 25 डेज़ में, ठीक है. एंड एज यू नो दैट 75 क्वेश्चंस वुड बी आस्क्ड एंड ईच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स and maximum marks is 300. Okay, now if you ask me, sir, what would be the cutoff for TISS HRM, I expect this to be somewhere around 240 to 250. Okay, now bare minimum I expect it to be 240. So if it is 240, that means you have to correctly answer 60 questions, then only you can reach this ballpoint figure, that is 240. Now this is just an estimation. Don't think that sir told that 240, then 240 would be the cutoff. No, it is not like that. Suppose the topper of the examination, like 1 lakh people are appearing for this examination, and the topper of the examination scores 230 due to some difficulty level or change in the pattern of examination. So the percentile system would be taken care of. So I hope that 97 plus percentile would be the like safe cutoff for TISS HRM course. ठीक है. Now this 97 percentile can come at any score. This can be 230, 240, 250. That depends on the level of examination. Now the thing which you should focus right now is you have to like clearly focus on how to attempt the paper and how can you score maximum marks. Okay, now 4 sections are there. The first one is English, then your quants, then DI, and then comes your reasoning. Okay, now by the time till now you must be aware of your weak point. What is your weak point? ठीक है, आपका वीक पॉइंट क्या है, आप किस में स्कोर नहीं कर पा रहे हो, किस टॉपिक में. किसी के लिए वो इंग्लिश हो सकता है, किसी के लिए क्वांट्स हो सकता है, किसी के लिए डीआई हो सकता है, और रीजनिंग मेरे ख्याल से किसी के लिए नहीं होना चाहिए वीक पॉइंट, बिकॉज रीजनिंग इज अ सब्जेक्ट विच कैन गिव यू विच कैन फेच यू एक्स्ट्रा मार्क्स. ठीक है, ये फ्री के फोकट के नंबर है. ठीक है, इसको जाने नहीं देना है. ये आपको बिल्कुल, आप समझ लो, अगर 25 क्वेश्चंस अगर रीजनिंग से आते हैं, अगर 20 क्वेश्चंस भी बेयर मिनिमम अगर रीजनिंग से आ रहा है, तो आप समझ रहे हो 60 मार्क्स आपको फ्री के, सॉरी 80 मार्क्स आपको फ्री के मिल रहे हैं. ठीक है, तो आपकी रीजनिंग पे बिल्कुल आपका पूरा पकड़ होना चाहिए कि रीजनिंग पे आप पूरे मार्क्स स्कोर करो. देन आपका डीआई आता है. डीआई के आई एक्सपेक्ट द बेयर मिनिमम क्वेश्चंस टू कम फ्रॉम डीआई to be like 5, in the range of 5 to 10. Like 5 would be the bare minimum questions would be asked from DI, and 10 would be the maximum question which can be asked from DI. Okay, now if the question ranges between them, like I hope 5 questions are asked, so 5 into 4, 20 marks. So 20 marks and plus reasoning 60 marks, 80 marks you should not lose. Sorry, reasoning 80 marks, this becomes 100 marks. So this 100 marks you should not lose. Not a single mistake should be committed. फुल 100 मार्क्स शुड बी अचीव्ड ईयर. ठीक है, पूरे 100 मार्क्स आपके आने चाहिए यहाँ पे डीआई और रीजनिंग को मिला के. आपको कुछ भी गलत नहीं करना है. ठीक है, now let's discuss about what is the topic of reasoning. Now in reasoning, you know that there are 2 types of reasoning. First is verbal reasoning and second is non-verbal reasoning. Okay, now in non-verbal and in verbal, you know, like syllogism and statement assumption and statement inference, this type of topics are asked in verbal reasoning. And non-verbal reasoning, the sitting arrangement, like I have told you guys that the most of the emphasis of NTA when it comes to CUET PG is they give a lot of questions from sitting arrangement. At least you will find 2 to 3 sets of 2 questions each. Okay, from sitting arrangement. And second is blood relation. They will give question from here, and then they will also give question from direction test. ठीक है, तो ये 3 टॉपिक आपके बिल्कुल एकदम मस्ट टॉपिक्स हैं, आपको इनको करना है. इनके अलावा आपको सिलोगिज्म एंड आपको स्टेटमेंट एजम्पशन वाले क्वेश्चन भी कर लेने हैं.
इनको अगर आप कर लेते हो पूरी तरह से तो आपका एकदम पूरा रीजनिंग का एकदम रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। आपको ये 80 मार्क्स कहीं जाने नहीं देना है। देन कम्स the thing of which you all are feared of, that is mathematics. Okay, now if I take, some of you might be weak in math quants. Now if you see, if you have solved any of the mock test before before giving it, like watching this video, if you have given any mock test, you might be aware like most of the question or any previous year question, if you see in PYQ, most of the questions are asked in quants from the arithmetic section, ठीक है। arithmetic section plays an important role in your selection. तो arithmetic में आपका SI, CI, then your time, speed and distance, time and work, these are few of the topics which are constantly asked in the examination and you have to master them, ठीक है। आप किसी भी तरह इनको मास्टर करो, ठीक है। देन आपका कुछ 2-3 क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि आपका परम्यूटेशन मतलब समझते हो ना, जैसे इफ़ अ वर्ड अरुण, हाउ मेनी टाइप्स अरुण वर्ड कैन बी अरेंज्ड, ऐसे करके जो क्वेश्चंस होते हैं, ये परम्यूटेशन वाले क्वेश्चंस भी देखा गया है कि पूछे जाते हैं। तो आप इनको भी कर सकते हो, परम्यूटेशन वाले क्वेश्चंस को और ये अर्थमेटिक को। अगर आपको अलजेब्रा नहीं आती है, अगर आपको ज्योमेट्री नहीं आती है, प्लीज़ अभी इस टाइम पे छूने की कोशिश मत करो। हाँ, मेंसुरेशन में आप एक बार सारे फॉर्मूले देख लेना, क्योंकि बहुत फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस पूछ रहा है, जैसे स्क्वायर का फॉर्मूला या फिर आपका सिलेंडर का फॉर्मूला, इस टाइप के क्वेश्चंस डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करके आने वाले क्वेश्चंस को वो पूछ रहा है, ठीक है। नाउ you're done with your quants. If somebody is weak in quants, focus only on those chapters which I told you. You will be easily able to crack them, ठीक है। अब बारी आती है आपकी किसकी, इंग्लिश की, ठीक है। इंग्लिश और यू वॉट एवर यू से VARC. नाउ इन दिस यू नो दैट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वुड बी, RC वुड बी प्लेइंग अ मेजर पार्ट। तो आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे ध्यान देना है। ट्राई टू सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ CMAT एंड and ZAT and any government examination reading comprehension, okay। And for verbal, you can watch any random YouTube channel where you can easily learn idioms and antonyms, synonyms, okay, and some grammatical error also. Now one thing more I would like to add in this, and that thing is PQRS. You know PQRS? What is PQRS? PQRS is the sentence arrangement which you would find. I think 1 or 2 questions would be coming from here, and these also is a freaka number. You should not lose any marks in these topics whichever I'm saying, okay। So these are few of the topics which you should aim to score well in all these topics, okay। If you correctly follow my advice and only do these topics in these 25 days, I am sure that you will score more than 240 plus. Now it is not the time to study new things, okay। Don't study new things. Like if you are not interested, or if you are afraid of algebra, or if you are afraid of geometry, please do not even touch them. I won't recommend to touch them, okay। Instead you can devote your time in DI, or you can devote your time in English. That would fetch you some good marks, okay। This is only for people who are weak in quants. If you are good in quants, then please do follow that, okay। Whatever subject you are good at, now you can be good at in reasoning or anything, now you should keep on revising things, ठीक है। गिव एटलीस्ट 1 मॉक every Sunday. Give at least 1 mock every Sunday, and practice, like from there you can practice questions and get the level, and you can get your all India rank. Where do you stand, okay। आपका ऑल इंडिया रैंक आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ पे अभी खड़े हो और आप कहाँ गलतियाँ कर रहे हो, वेयर आर यू कमिटिंग मिस्टेक्स, okay। So this is all about how you should plan your timetable and how you should perform, ठीक है। आपका टारगेट यही होना चाहिए कि आपको कुछ भी करके 230 प्लस जाना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप इसके प्लस ऊपर जाओगे तो आप अपने आप ही सेफ जोन में आ जाओगे, ठीक है। चलिए,
तो इतना ही मैं कहना चाहूँगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहूँगा। आप बस इतना ये स्ट्रैटेजी फॉलो करिए और पढ़ाई करिए अच्छे से, आपका बहुत आराम से पेपर निकल जाएगा। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट।